on 29 July 2025. माननीय श्री एस जयशंकर। Honorable Chairman, sir, it's a privilege to participate in the discussion on Operation Sindhur. And like everybody else in this House, I laud the performance of our armed forces and the results that have done this country so proud. Sir, when the Pahalgam attack happened on April 22nd, it was a shocking attack for a variety of reasons. The manner in which people were killed in front of their families, the fact that the fate was asked before killing them, the intent of destroying the economy of Jammu and Kashmir, which had returned to normalcy and prosperity after the end of Article 370. All of this, it angered the country. There was grief, there was shock. Across the world, there was solidarity, there was sympathy. But the question was, what after that? And the answers were two. One, such an attack was absolutely unacceptable. It crossed our red lines. There had to be severe consequences. And two, there had to be accountability and justice. There had to be accountability of the perpetrators, and they and their supporters had to be brought to justice. Now, the first clear message, sir, of India's anger, of our resolve, of our determination, was the decision taken by the Cabinet Committee on Security immediately, the day after, on 23rd of April. A number of steps were taken. Pakistani visas under SARC were cancelled. The mission was reduced in strength. The military advisors were expelled. But the most important decision was to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. Now, sir, there has been a lot of discussion in the House. Different members have expressed their opinion, as they should. But I think the importance of this step, it's necessary that the House understand and appreciate it. Because, sir, the Indus Waters Treaty in many ways is a very unique agreement. I cannot think of any agreement in the world where a country has allowed its major rivers to flow to the next country without having rights on that river. So it was an extraordinary agreement. And it's important when we have put it in abeyance to recall the history of this agreement. Now I know, sir, yesterday I heard some people are uncomfortable with history. They prefer that historical things are forgotten. Maybe it doesn't suit them, they only like to recall some things. So let me, for the benefit of the House, sir, mention three important observations which were made in Parliament on the issue of the Indus Waters Treaty. This was on November 30th, 1960. And the observations were made by the then Prime Minister on this subject. First, he says, I would like to know, is this House now to judge the quantum of supply of water or the quantum of money to be given? I confess I cannot judge it offhand. So the Prime Minister of India then is telling the Parliament, you cannot be a judge of the quantum of water. You should not be looking at how much money we are giving to Pakistan. That is not your business. Let me, sir, give you a second quote. The Prime Minister then goes on, sir, because many members objected to the Indus Waters Treaty. He says, honorable members have been saying that there was a partition. What has happened is none of our lookout. We should not give them anything. That is neither, now this is the Prime Minister's view, sir,
then Prime Minister's view. That is neither a strictly legal, constitutional, or just approach to this problem. If we follow that approach, it would mean turning a great part of West Punjab into almost a wilderness. West Punjab is Pakistani Punjab. So the Prime Minister is saying, let us do this treaty because the Indian Parliament, the Indian government, the country should put the interests of Pakistani Punjab. So not a word about the interests of the Kisan of Kashmir, of the people of Punjab. Please take your seat. Mr. Jairam Ramesh, nothing is going on record. Please, nothing is going on record. Not सिर्फ माननीय विदेश मंत्री की बातें ही रिकॉर्ड पे जा रही हैं. Not a word about Rajasthan, not a word about Himachal, but it is turning a great part of West Punjab. Take your seat. Sorry, sir, we can't get treating like this. Into almost a wilderness. He's lying here. Sir, Please take your seat. He's not lying. सीट पर बैठ करके बोलना सही नहीं है, आप जानते हैं. sir, then I'll give you the third quote. Please. He now says, because people are saying, you are paying money. We felt that in the circumstances, this is the right payment, and we purchased a settlement, if you like. We purchased peace, and it is good for both countries. 1960, sir, he says he purchased peace. We did not purchase peace, sir. It was a purchase of appeasement, because within 1 year, the same Prime Minister accepted that with Pakistan there was no peace. Now, sir, I hear some noises across the bench. I would be very happy to submit, sir, the Prime Minister's speech in the record of the Lok Sabha and keep it on the table. Now, I mention this, sir, because Please. that very treaty, Please. that very treaty, आपका अपॉर्चुनिटी आएगा, आप बोलें अपनी बात को. Please. that very treaty mentions in the preamble that the Indus Waters Treaty is done in a spirit of goodwill and friendship. Sir, since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism, we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it. सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों पर नहीं थी, उनको सर फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी, उनको फिक्र हिमाचल पर नहीं थी. Ruchi ji has right to speak. No, please. और you'll get your opportunity to speak. Please. सर, उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए. और सर, जो वो कहते हैं कि हमने ये शांति की कीमत थी, नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत थी. अब सर Please. Let the honorable minister speak. We sir grew up with the belief that nothing can be done. Please. Sir, we were told. Please. We were told for 60 years. आपको मौका मिलेगा, आप बोले. Please. Sir, we were told for 60 years that nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Sir, we had warned. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together.
Now, sir, let me come to Operation Sindhur. The goals of Operation Sindhur were spelled out very clearly within half an hour of the operation commencing, and it was stated very directly that the objective of Operation Sindhur was hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. It was also said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature, and we are living up to a commitment. I will come to that commitment, sir, in the UN Security Council, that those responsible for the attack will be held accountable. Now, sir, the House knows that India has faced a special cross-border challenge, not today, not for 10 years, not for 25 years, from 1947. That from few months after our independence, the cross-border terrorism started when so-called tribal invaders were sent across and they came into Jammu and Kashmir. And from that time, sir, we have had to lead the global fight against terrorism. There is no country in the world, especially I would say after 1980s, there is no country in the world which has had to suffer the kind of terrorism, which has taken the kind of casualties we have, which has seen, so many states, so many facilities, so many people attacked in this inhumane manner. But sir, if we have to shape global thinking, if we have to convince others, we must be clear ourselves. And again, I refer to history. Because why do I refer to history? Because what was decided in the past is not a debating point. The decisions of the past have an impact on the present, have an impact even on the future. We inherit a thinking about us, we inherit a policy, we inherit actions. So we have to see what actually was the record. Now the reality, sir, was, if you look for that decade before the Modi government came to power, we have had a series of attacks. And this is well known. In Mumbai in 2006, because this attack is particularly important, 187 people died. Please. In 2000... You cannot dictate what he will speak. No. Please, let him speak. He will speak. Only this will go on record. In 2008, आपको जब अपना मौका मिलेगा तो बोले, आप दूसरे को बोलने से रोक नहीं सकते. प्लीज आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. आप खुद अपना पक्ष रखते हैं, दूसरा सुनने को तैयार नहीं. प्लीज. In 2007, 44 people died in Hyderabad. In 2008, the Mumbai attacks of 26/11. The world still remembers it. 246 people died. In Jaipur in 2008, 64 people died. In Ahmedabad in 2008, 57 people died. In Delhi, sir, I am a person from Delhi. I remember the bomb blast which took place in 2008. So we went through a series of attacks. Now, why am I reminding the House of this? I am reminding... Please, Mr. John Britas, please take your seat. I am reminding the House because when major terrorist incident happened, the world watched how did India respond. And the world drew lessons. So how did we respond? After 2006, I refer to the Mumbai train bombing. July 2006 was the bombing. In September 2006, within 3 months, we had a meeting in Havana where it was agreed between the Prime Ministers of India and Pakistan. Instead of holding Pakistan responsible, we said we condemn all acts of terrorism and agree that it's a scourge that needs to be dealt with. And by the way, we will resume our composite dialogue. Now,
there are two important points which flow out of it, and they are relevant because this shapes the world's perception of how India is likely to respond. It shaped the world's perception that within 3 months, you are actually equating the victim and the perpetrator. And in a move away from what was agreed to in January 2004 between Prime Minister Vajpayee and General Musharraf, where Pakistanis had assured us that their territory and territory under their control will not be used to attack us. Now we are saying, yes, terrorism happened. It happened 3 months ago. A lot of people died in Mumbai. But fine, we will go on with the composite dialogue. So this, sir, started shaping the thinking of the world about India's response to terrorism. Now, if this was not bad enough, it was actually Mumbai, 26th level. Now, there is not a single person in this house, not a single person in this country who will ever forget or forgive 26th level. Now, in the case of Mumbai, sir, Mumbai attack happened November 2008. By July 2009, there is a meeting in Sharm el-Sheikh. And in Sharm el-Sheikh, I remind the House, sir, it was agreed terrorism is the main threat to both countries. Both countries. I mean, that guy does that attack. And we say terrorism is a threat to both countries. Terrorist action on terrorism should not be linked to composite dialogue. And of all things, sir, there was an astounding connection to Balochistan. I mean, we are allowing the Pakistanis to imply as though we are doing something wrong after. And this is not just a statement, sir. It is coming after the most horrific attack in Mumbai just a few months ago. Now, the thinking behind this, sir, because I have to recall history to remind the House how much has changed in the last 10 years. The thinking behind this, I quote from the book of the National Security Advisor of the UPA government. He says the simple answer to why India did not immediately attack Pakistan is that after examining the options at the highest levels of the government, the decision makers concluded that more was to be gained from not attacking Pakistan than from attacking. So, sir, this is the thinking. So, I sir, want to today when we are hearing talk hyphenation. Sir, these are people who are self-hyphenating themselves. They are telling Pakistan, you and I are the same level. We are both victims. So they did not need anybody in America or anywhere else to hyphenate them. They were doing it themselves. And most important, sir, they had routinized, they had normalized terrorism. They made out, हाँ terrorism हो गया, but चलिए dialogue के लिए चले जाते हैं. हर बार सर इतनी बड़ी घटना होती है, मुंबई 26/11 होती, ट्रेन बॉम्बिंग होती है, कुछ महीने बाद आप कहते हैं नहीं ठीक है वो हो गया, चलिए बात के लिए चलते. अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? आप दुनिया क्या सोचेगी? और आप सर जो 2004 में जो तय हुआ कि उनके यहाँ से कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी, आप तो भूल गए उसको. प्लीज चेयर पर बैठकर ना बोलना है, ये सदन की परंपरा नहीं है. मेरा सबसे अनुरोध होगा, आप सबको मौका मिलेगा, अपना पक्ष रखेंगे. प्लीज. अब सर मैं समझाना चाहूंगा कि पिछले दशक में क्या बदला. नरेंद्र मोदी के सरकार में आतंकवाद के बारे में क्या बदला? एक सर के आतंकवाद, टेररिज्म, अब हम लोग सर इसमें माननीय गृह मंत्री के बयान के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. प्लीज सर. माननीय विदेश मंत्री, सॉरी, करेक्टेड, स्टैंड करेक्टेड, विदेश मंत्री, प्लीज. Let me tell you, sir, what has changed in the last decade. And I will keep it very sharp and short. Number one,
we have been able to put terrorism on the global agenda. We have every forum, BRICS ho, Quad ho, SCO ho, bilateral ho. Today, if terrorism is on the global agenda, it is due to the efforts of the Modi government. Number two, sir, we were able to get Masood Azhar and Abdul Rahman Makki, two notorious terrorists, sanctions placed under the sanctions of the UN Security Council 1267. Three, sir, we were some years ago members of the Security Council. We were able to hold a Security Council meeting at the venue of terrorism attack, that is the Taj in Mumbai. That event had a huge impact about global consciousness on terrorism. Fourth, we were able, through bilateral agreements and understandings, get back terrorists from key countries who have been sent back to India under extradition agreements. And I remind you here, sir, that Tahavur Rana, who was wanted for 2611, finally has been brought back by the Modi government to India, who is today facing trial in this country. Then, sir, Please. we have exerted. Please listen, Sanjay ji, please listen. We have exerted huge pressure on Pakistan through the FATF process. We have convened and we actually had a conference of no money for terror. We have today joined this effort at blocking, identifying financials of terrorists. We were, sir, able to get the Resistance Front listed as a global terrorist organization. And, sir, I would like to inform the House that the monitoring team of the UN has submitted its 36th report of the Analytical Support and Sanctions Team. And it mentions, this has just been received, so it is made public today. For the first time, the United Nations report mentions the Resistance Front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunct. So we were able to get into UN a recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for Pahalgam. Now, sir, sometimes it is asked, saying, well, these are declarations, what do they matter? They matter, sir, because they shape global opinion. And again, I want to say, what is the change? Because change only comes out through contrast. Yesterday, sir, one honorable member made a reference to BRICS. We just had a BRICS meeting. For the first time, we were able, in a BRICS meeting, to get an explicit reference to a terrorist incident. It says here, the BRICS countries, sir, that we condemn in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22 April, and we reaffirm our commitment to combating terrorism in all forms and manifestations, including cross-border terrorism. Now, sir, I want to draw a contrast to tell you the change of the last decade. In 2009, there was a BRICS meeting. It was the first BRICS meeting after the Mumbai 2611 attack. There is not even a reference to Mumbai in that BRICS committee. All it says is, we strongly condemn terrorism in all forms and manifestations, reiterate that it has no justification. So, today, sir, when people say, okay, where was Indian diplomacy? Indian diplomacy has been successful in getting America to declare TRF as a global terrorist organization, in getting the UN Security Council monitoring team to accept that TRF today is a terrorist entity, in getting BRICS, which is composed of some very difficult countries, to getting BRICS
even to recognize the seriousness of Pahalgam and to say, and sir, when people say cross-border terrorism, what border do they mean? Does this have to be spelled out? So, the point is that in the last decade, there has been a huge change in India's approach to terrorism, and this change on the ground was demonstrated in Uri, after Uri, in our surgical strike. It was demonstrated in 2019 in the airstrike, and it is today, sir, demonstrated through Operation Sindhur. Now, sir, when Operation Sindhur commenced, a number of countries were in touch with us. I'll speak about that in some detail. Why do countries contact you? They want to know what is happening, what is your thinking, how serious is it, how long would it go? And to all the countries, we gave the same message. We gave the message that India is exercising the right to defend itself. We, sir, gave the message that the targets which were selected and hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. So some of them, for example, Bhavalpur, is associated with the murder of an American reporter called Daniel Pearl. So the world is aware of this. We gave a message, sir, that we were not open to any mediation, that anything now between us and Pakistan would only be bilateral. We gave a message that we will not accept nuclear blackmail, that whatever talk there may be about nuclear danger, that will not deter us from going ahead with Operation Sindhur. We gave a message that we are now responding to Pakistani attacks and we will keep responding, and if that fighting is to stop, Pakistan must make a request, and that request can only come through the channel of the DGMO. Now, as I said, sir, a number of countries spoke to us. There was, I think, particular interest in the House about the conversations with the United States. So let me share a few words there, sir. So first of all, it is somehow being implied that talking to the United States or being in touch with the United States is itself a problem. Now the fact is, over a period of time, if you look at our history, you look at world history, countries contact each other at such times. And look at ourselves. I will not talk about what happened in 1962. What were the letters written after 1962? Because even today it hurts me to read what Pandit Nehru wrote to John Kennedy after 1962. But let me refer to 1971. That when the fighting started, Prime Minister Indira Gandhi writes to President Nixon that in this hour of danger, the government and the people of India seek your understanding and urge you to persuade Pakistan to desist forthwith from the policy of wanton. Please, nothing will go on record. Sanjay ji, baith jaiye, please. You speak. From the policy of wanton aggression and military adventurism that they have unfortunately embarked upon. May I request Your Excellency to exercise your undoubted influence with the government of Pakistan to stop their aggressive activities against India. Please let him speak. आप उनकी बात सुने आपको मौका मिलेगा जवाब देने. प्लीज हर बार खड़ा होकर डिस्टर्ब. संजय जी, ये गलत परंपरा है. आप अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है. प्लीज ये जिम्मेदार आचरण नहीं है, ये संसदीय मर्यादा नहीं है. आप अपनी बात कहेंगे, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है. बिल्कुल नहीं. आपकी इच्छा अनुसार कोई बात कहेगा. प्लीज शक्ति सिंह जी बैठे. आपने अपनी बात कही, दूसरे पक्ष को सुनिए. प्लीज आप बोलिए. नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. प्लीज आप बोलिए. Now let me come to what were the contacts between India and the United States. So on the 9th of May, Vice President Vance called up the Prime Minister to warn him that there was, in the American assessment, a massive Pakistani attack
which would come in the next few hours. Prime Minister listened and made it very clear that if anything like that happens, it would get a fitting and appropriate response from our side. Now, a few hours later, that happened. And then, sir, that fitting and appropriate response also happened. And that fitting and appropriate response disabled the entire Pakistani air defense system and rendered all their main airfields inoperative. Now, at this stage, we started getting calls saying we think that the Pakistanis are ready to stop fighting. So, Please, Secretary please. Rubio called. No, Mr. Surjewala, not allowed, please. So, Please speak. So- That will go on the record. the response which we gave, the response we gave to anybody who spoke to us was that the Pakistani side has to make a request, and that request has to come through the DGM. No, wait, no, I'll tell you, sit down, I'll tell you who called. Now, sir, I want to make three things clear. One, there was no leader, nobody anywhere in the world who asked India to stop its operations. This is something the Prime Minister also said. Number two, there was no linkage with trade. No, I'll tell you. So there is no linkage of trade. There was no linkage of trade in any of those conversations, and there was no cause between Prime Minister and President Trump. Now, so Nothing is going on record. Mr. Surjewala, you please don't disturb the house. Please. Please, nothing is going on record. Please. So I think if honorable members will sit down and allow me to continue. Please. During this period, as I said, we had a number of conversations with different countries. We had conversations with the US, we had a conversation with the EU, we had a conversation with Saudi Arabia, and I want to say this. All the calls which I got are actually on record. They are on my social media record. So it was on the 10th of May, we got calls from US, we got calls from Saudi Arabia, we got calls from a few other countries. Most नहीं आप इस तरह नहीं, प्लीज आप इस तरह आचरण. So the point is, to everybody the answer was the same. The answer was, if the Pakistanis want to stop fighting, the Pakistanis have to request us. The Pakistanis have to request us through the DGMO channel, and that, sir, is exactly what happened. Now, sir, I would like मिस्टर माननीय शक्ति सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाए. आप बैठे, संजय जी बैठे, प्लीज आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाती. Sir, I would like to Please. share what is the response. Sir, आप डिसऑर्डर मत क्रिएट करें प्लीज. एज पर रूल्स, गो बाय रूल. शक्ति सिंह जी, आप कुछ भी बोले, आप अपनी बात कुछ भी रखें, दूसरे की बात न सुने, सही नहीं है. प्लीज मर्यादित आचरण रखिए, प्लीज. Sir, I would like to respond to I would like to share with the House how the world responded to this. One, sir, it's very important for the House to recognize that the UN Security Council passed a statement. Please. Mr. Jairam Ramesh ji, please take your seat. Jairam Ramesh, sorry Please, sir, आप I should address the remarks to you. Please. सर, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें
कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। प्लीज, ये सही परंपरा नहीं। आप अपनी बात कहें और दूसरे पक्ष की बात न सुने, ये लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आप सब लोग धैर्य से सुने, प्लीज प्लीज। आप बोले, आप बोले। सर, अगर now if we come to how the world responded, I think प्लीज नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, आप दूसरा पक्ष सुनते नहीं है। प्लीज, आप अपना पक्ष कहते हैं, दूसरे का भी सुनिए, प्लीज प्लीज। in terms of the UN, in terms of the global response, I think most noteworthy was the UN Security Council statement. That statement was very noteworthy because Pakistan was a member of the council. We are not members of the council. Despite not being members of the council, we were able to get the UN Security Council to issue a statement. बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया सीट पर बैठकर इस तरह से न चिल्लाएं, न कमेंट्री करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं, डू नॉट फोर्स मी, प्लीज। जरा सुने, प्लीज प्लीज प्लीज। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करें, प्लीज बैठ जाइए। आप बोले, प्लीज। So the UN Security Council on the 25th of April, और ये सर आप सोचिए कि हम सदस्य नहीं थे, पाकिस्तान सदस्य था, उसके बावजूद our diplomacy was able to get the UN Security Council to issue a statement underlying the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of Pahalgam act of terrorism accountable and bring them to justice. Now not only that, sir, in this period, if you look, because lot of comments were made yesterday, how good was Indian diplomacy? आपके कितने लोगों को समझा पाए, कितने लोगों को इनकी अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट क्या थी? सर, वी हैड अ स्टेटमेंट फ्रॉम क्वाड, वी हैड अ स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रिक्स, वो बहुत अलग अलग ग्रुप थे, बट येट क्वाड वाज स्पेसिफिक इन कंडेमिंग द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम and repeating the call of the UN Security Council to bring the perpetrators and organizers to justice without any delay. In the case of BRICS, so the very BRICS which after Mumbai 26/11 could not even use the word cross-border terrorism. आप लोग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आपने मुंबई की बात उठाई नहीं वहां। अब वो लोग जो मुंबई पे चुप रहे, आज सर ज्ञान दे रहे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। और अगर आप ब्रिक्स में देखें, BRICS has a specific reference to cross-border movement of terrorists, nothing is going on record, please, and safe havens. सर आगे देखें सर, please. We were able to get please. Central Asian countries. Please. We were able to get Central Asian countries to oppose providing safe haven using terrorist proxies for cross-border terrorism, terrorism financing. We were able to give Indian Ocean rim countries. We were able to get Germany. We were able to get France. We were able to get European Union. We were able to get Russia. Sir, अगर आप रशिया का देखें, President Putin has said that this brutal crime has no justification whatsoever and its perpetrators will face a deserved punishment. So sir, I want to say that in terms of diplomatic support, we were able to get a wide range of countries, including our neighbors. Every one of our neighbors, barring Pakistan, issued a statement expressing solidarity, condemning Pahalgam. So, a lot of them said explicitly that people should be brought to justice.
So I do want to say that in terms of diplomatic understanding of what was happening, that Let me speak. In such kind of noise, it's all people are on this matter. No. आप सभी लोग एक साथ खड़े होंगे. मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसको अलाउ करूं? आई कैन नॉट. प्लीज, you all sit. Please. Yes, Sushmita ji, tell me. Honorable Minister, just a minute. You tell me point of Sir, order. Rule 240, irrelevance or repetition. The chairman, after having called attention of the council to the sir, he is repeating everything that is... Honorable Minister, it's irrelevant. Please. प्रेस Please. वाला बात मत उठाइए. ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें जर्नलिस्ट को. सच्चाई बात है. बिना कोई बच्चा कोई नहीं बोल रहा. Please take your seats. Honorable Minister. ठीक है सर, डिस्टर्ब नहीं होते. हाँ, आप कंटिन्यू करिए. आप अब सर, मैं हाँ. सर, डिस्टर्ब वो लोग होते हैं सर. वो डिस्टर्ब वो लोग होते हैं जब सर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, रिकॉर्ड की बात करते हैं, जब तुलना होती है तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं. तो सबको समझना चाहिए. Sir, lot of questions. Sir, questions have been raised about how Operation Sindhur progressed. I don't want to say very much, sir. I just make 4 points. One, anybody who wants to see, who wants to judge what was the success of Operation Sindhur, please go to YouTube and look at the funerals which were taking place in Pakistan. When you see whose funeral, who's attending, you get the answer. Number 2, if you are still not satisfied, please go to YouTube again and please look at the pictures of Pakistani airfields. Please look at the Pakistani airfields. Please see the destruction of Pakistani airfields and you will see how successful Operation Sindhur was. Now, sir, there were 2 great centers of terrorism. 2 great centers of terrorism. दुनिया जानती है सर, हम सब लोग जानते हैं. पिछले 25 साल से सब जानते हैं सर, भावलपुर और मुरीद के. They have been the biggest centers of terrorism directed against India. Today, sir, Bhavalpur and Murid are reduced to dust. Point of order, disorder create करने के लिए I am not entertained. Please, Honorable Minister, मिर्सर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आप अपनी जगह बैठ जाएं. आपको बोलने का जब मौका आएगा अपनी बात कहेंगे. No, you cannot do it. Please. So, sir, I want to say this. Nothing is going on record your For verse. decades, Bhavalpur and Murid were considered the biggest centers of terrorism, not just in Pakistan, for global terrorism. So let me tell you, when we hit Bhavalpur and Murid, the whole world thanked us for what we did. We did a global service. When we reduced it to dust, when those funerals were taking place, when people came to cry over those dead terrorists lying around, that was the success of Operation Sindhur. Now, sir, sometimes people are determinedly skeptical because if government does something, wo us side baithe hain, they cannot bring themselves to believe it. So I want, sir, to quote from people who are involved on the other side. So Prime Minister Shehbaz Sharif says, our armed forces were prepared to act at 4:30 in the morning after Fajr prayers to teach a lesson. But before that hour even arrived, India once again launched a missile attack using BrahMos, targeting various provinces of Pakistan, including the airport in Rawalpindi and other places. This is the Prime Minister of Pakistan admitting. People are skeptical कि भाई success हुआ नहीं हुआ.
Now, he says again, sir, General Munir called me on secure line and said India's ballistic missiles have hit the Noor Khan air base. So when people ask, sir, what brought end to fighting? What brought cessation of fighting? Sir, the Indian armed forces did not require anybody else. The Indian armed forces achieved that. Anybody, I want to say this, sir, anybody who says that some other party brought this about is disrespecting the Indian armed forces. The Indian armed forces ensured this. It was our bombing, it was our strikes, it was our destruction of the airfields. That is what happened on 10th May. That is why the phone call came. That is why they said, okay, we are now willing to accept this. So, I think when people, for scoring political points, should not get so carried away that they then decry the great achievements of the Indian Armed Forces for which we are all gathered here. I mean, how low can your politics go? So, sir, I want, sir, to now come to where we are. Now, I used, sir, the word new normal. I understand there were some objections. Some people thought it's not the right word. I will rephrase it, sir. There are two normals. There is a Congress normal, which I spoke about, and there is a Modi normal. Okay? And let me tell you, sir, what is the Modi normal? The Modi normal is terrorists are not proxies. Number two, cross-border terrorism will get appropriate response in our way at our time. 3, talks and terror will not go together. Please on with us. If there are talks, it will only be about terror. Number 4, we will not give in to nuclear blackmail. And number 5, terrorism and good neighborliness cannot go together. And therefore, sir, blood and water will not flow together. And I know some members raised some issues about it, but I want to say, dams may have taken years to build before. This is Modi government, things are different, you will see the change on the ground. And again I repeat, blood and water will not flow. Now, sir, some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया. तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली. अब सर इनको छोड़िए. इनके अलावा एक और चाइना गुरु है. अब सर अब ऐसा है सर. जयराम जी. सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर, 1, I did not get China teaching by going to Olympics. किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर. I was not a special person. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ. अब सर कभी-कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया उसकी तो बात ही नहीं करते. और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे. तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में. पर सर कभी-कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है. तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं. तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं.
तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे, को पता है। तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और मैं जानता हूं सर, उस चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना घोषित किया गया सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सर हमारे यहाँ एक जनरल थे, ईस्टर्न कमांड के जनरल थे, जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूं, मेरे लिए सब ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमैट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि सर ये आया कहीं और से। देखिए इस दशक में और क्या हुआ। इस दशक में 2006 में इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। बैठकर कमेंट्री न करें, कोई बात रिकॉर्ड आपकी नहीं जा रही सर। 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए, 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाइए। हाँ सर 2006 में जब प्रेसिडेंट हू जिनताओ भारत आए थे, उस समय निर्णय हुआ कि हम चाइना के साथ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट FTA जैसे करेंगे। इसके लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा हुई, टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया और वो सर आपने टेलीकॉम प्लीज टेक योर सीट, प्लीज नो यू कैन टेलीकॉम व्हेन योर अपॉर्चुनिटी कम्स यू स्पीक। नो टेलीकॉम जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में चाइनीज कंपनीज को आपने निमंत्रित किया। फिर सर सम्मान पर आज सर मिस्टर जॉन प्रकाश प्लीज टेक योर सीट। आज सर लोग राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं सर। सबसे बड़ा नुकसान सर हमारे लिए। प्लीज टेक योर सीट। नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा, आप बैठ करके प्लीज। आप खुद स्वतः खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते, आप प्लीज फॉलो द रूल्स प्लीज। आप बोले, आप बोले। अगर समुद्री क्षेत्र में
सर, अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को कहीं पिछले 20 साल में कहीं नुकसान पहुंचा है, आपको मौका आएगा तो बोलेंगे, आप डिस्टर्ब ना करें। आपको मौका आएगा बोलिएगा, प्लीज प्लीज। सर, अगर आपको मिल चुका है आपकी पार्टी को, प्लीज नो, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, प्लीज। अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को पिछले 20 साल में कहीं नुकसान, कहीं चोट पहुंची है सर, सबसे बड़ी चोट जो है हम्बान टोटा बंदरगाह बनने के कारण, और ये सब 2005 में तय हुआ। और आप हैरान होंगे सर कि ये 5 और 8 के बीच में ये बंदरगाह बनाई गई, और उस समय सर आपको पता सरकार ने क्या कहा कि हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। ये बात उठाई गई थी, इस सदन में उठाई गई थी। इस सदन में जवाब दिया गया कि हमारे लिए ये विषय नहीं। और सर, नेपाल की बात करते हैं लोग, आप जानते हैं सर कि पहला एग्रीमेंट हथियार देने का चीन से नेपाल 2008 में तब तय हुआ जब सरकार पलट गई नेपाल। ग्वादार को देखिए सर, 2013 में चाइना ने वहां ऑपरेशन शुरू किया। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए, आप किन किन से मिले इसको डिस्कस करने? तो सर कल वो अभी तो बैठे नहीं हैं सर, हमारे माननीय संसद सदस्य चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा सर, उन्होंने पूछा मेरे से कि आप चाइना गए तो आपने क्या डिस्कस किया? सर मैं चाइना गया, whatever I said, whatever I did was public, it was open, it was clear. Sir, I discussed terrorism, I discussed de-escalation, I discussed restrictions on trade which China has put. I made it clear that relations with China will develop only on the basis of 3 mutuals: mutual interest, mutual sensitivity, mutual respect. So, please listen. You are not allowing him to speak. No, you are disturbing. Please, sir. No, please. Because उन लोगों की आदत है. I want to make one clear. Unlike some other people, I had no secret meetings. I did no secret agreements. ये मैंने नहीं किया. वो खाली ओलंपिक वाले करते, वो नॉर्मल लोग नहीं करते. चाइना गुरु किया, चाइना गुरु करते. अब सर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही थी. ये कुछ लोगों का मत था कि भाई कब रिकवर होगा, और जैसे राजनाथ जी ने कहा सर कि हम पूरा विश्वास है सर कि एक दिन जरूर होगा, और ये सदन की सोच भी है. ये खाली मेरी सोच नहीं है, ना सरकार की सोच, ये पूरे सदन, पूरे देश की सोच है. पर मैं सर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम कहते हैं 47, 48, 49 में बात बनी सर, पर सर 63 में नेगोशिएशंस हुए इस पे. 65 में हाजी पीर की बात हुई सर, लौटाया गया. 72 में जो जमीन जो हमारे हाथ में था वो भी लौटाया गया. तो आज जब लोग पूछ रहे, जिनके मन में कभी कल्पना नहीं थी कि भावलपुर और मुरीद के गिराएंगे, जिन्होंने कहा कि बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद मुंबई इज इनएक्शन, that we should not go to war because that is not attack Pakistan because better option than attacking Pakistan. वो लोग सब पूछ रहे हैं पीओके के बारे में. कैसा सवाल है उनसे? और सर यूएस और पाकिस्तान की भी बात कहीं जिक्र हुई सर. यूएस और पाकिस्तान, अब सर ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में हमारी सोच कुछ और है, अमेरिका की सोच कुछ और है. ये आज की बात नहीं है. So historically, we have had a different view, we have had different policy, we have had different interests. And it has been a problem between India and United States. Not today, not between this government and that administration, previous government and then administration also. I have been in the room, sir. I have been in the room when America was taking up the case of General Musharraf and asking for concessions on Kashmir. So I want to say this, that on this issue,
We have a national policy. No mediation is a national policy. Bilateral dealing is a national policy. I hope today no talks without, that is no terror, only then talks will also be a national policy and everybody will agree. So it is not the first time that we have had differences with the United States. So there were some other questions which were raised about US. You know, have we stood up and taken up various issues? Sir, I would like to inform the House through you, sir. Every issue that we have had with the United States, we have had no hesitation taking up. We took up deportations. Today, we do not have that problem. We took up visas. We took up the cause of students. Now, Mr. Chidambaram requested whether we should take up Harvard, sir. मैं तो JNU का पढ़ा हूँ, sir. मैं Harvard का नहीं हूँ. So I hesitated to take up Harvard. And sir, I want to say this. Today, we are negotiating a trade agreement. Why are we negotiating a trade agreement? Because we have national interest at heart. We have national interest at heart and we are negotiating a trade agreement that will serve our national interest. So there should be no doubt that this government is fully committed to our national interest. We have the ability to stand up to wherever we have to, on whichever issue we have to. So what is important today for the House to recognize is Operation Sindhur today is a well-considered, thought-through response. It was a response to this barbaric attack in Pahalgam. But today it has become the basis for a new policy. That basis, what I called the new normal, the Modi normal, is something which has been communicated very clearly to Pakistan and to the world. And finally, sir, let me end my remarks with a very, very sincere expression of appreciation for all the members of Parliament and for those outside Parliament as well, who joined the parliamentary delegations. I think each one of them, sir, whether it is Shashi Tharoor ji, whether it is Kanimori ji, whether it is Ravi Shankar Prasad ji, Baijan Panda ji, Sanjay Jha ji, sir, Supriya Sole ji, or Shrikant Shinde ji, sir. Every one of them and all the members, every member took a united stand abroad. They did our country proud. Yes. They answered all doubts. And I can tell you from every country, they visited 33 countries. Yes, John, you know, I thank you too. Sir, I don't want to read out everybody's name. I would like to read out, but sir, samay ki seema hai. But again, I want to say this, sir, very, very sincerely, that they have done a great national service. They showed a united spirit, and we hope that that is the spirit with which the nation will support Operation Sindhur. Thank you. दोला सेन जी, प्लीज आप बंगला में बोलेंगी, प्लीज स्पीक. No, nothing is good. Please, you speak. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me chance to speak on this subject. And thanks to my party, All India Trinamool Congress, and our respected leader, Honorable Mamata Banerjee, for giving me opportunity to speak. I will try to deliver my speech in Bangla, our beloved mother language. খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার যে বিরোধীরা দাবি করা সত্ত্বেও সংসদে স্পেশাল সেশন না হলেও শেষ পর্যন্ত 3 মাস পরে সংসদের অধিবেশনে যে এই বিষয়ে 2-3 দিন ধরে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বটেই, এমনকি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কথাতেও এতজন নিরীহ নাগরিকের, মানুষের, দেশবাসীর মৃত্যুতে কোনো দুঃখ প্রকাশ শোনা গেল না। এনাদের কোনো খারাপ লাগা নেই। It's not only that they are not feeling guilty, they are not even sorry. So unfortunate, sir. মানবিকতাহীন, মনুষ্যত্বহীন এই শাসক দল বিজেপি। লজ্জা। সদনে দাঁড়িয়ে বিদেশ মন্ত্রীও অসত্য বলছেন স্যার। অসত্য। So sad, sir. কি দুঃখজনক যে যখন পহেলগাঁও যুদ্ধ, অপারেশন, সব প্রশ্নে আমাদের বিরোধীদের স্ট্যান্ডই ছিল ইউনিয়ন গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করার।
তখন অকারণ বিরোধীদেরকে দায়ী করে খুব ছোট নিম্ন স্তরের রাজনীতি করলেন সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী। একবারও বললেন না ইন্টেলিজেন্স ফেলিওরের কথা বা হোম মিনিস্ট্রি কোনো বিন্দু মাত্র দোষ আছে, দায় আছে, দায়িত্ব আছে, যার জন্য পহেলগাঁওতে এতজন নিরীহ নাগরিক, পরবর্তীতে পুঞ্চ রাজৌরি, জম্মুতে আরো কতজন নিরীহ সাধারণ মানুষ, কত সেনা জওয়ান, আর্মি অফিসার, পাইলট সহ আর্মির পদাধিকারীরা প্রাণ গেছে, তাই তারা দুঃখিত না, কোনো দুঃখ প্রকাশ নেই এনাদের। 26/11 পর কিন্তু 4 দিনের মাথায় 30 নভেম্বর 2008 তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন, মুম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো ছেড়েই দিন, গোয়েন্দা প্রধানের মেয়াদ বাড়লো, চাকরির পুরস্কৃত হলো, ছি ছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার পহেলগাঁওয়ের ঘটনার ঠিক আগে 3 দিন ছিলেন জম্মু কাশ্মীরে, কি সব যেন ঘোষণাও করেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এত বড় ব্যর্থতার পরেও এত অ্যারোগ্যান্স, অহংকার, ঘামান্ড, স্যার, জাস্ট আনঅ্যাকসেপ্টেবল, কন্ডেমেবল, ভাবা যায় না। 370 ধারা তুলে দেওয়ার সময়ও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে ট্রেজারি বেঞ্চ রাজ্যসভা থেকে আমাদের মতো অনেক বিরোধীকে সাসপেন্ড করেছিল, তবে তা পাশ করতে পেরেছিল। তখন কি ঘোষণা ছিল তাদের? এর ফলে জম্মু কাশ্মীরে সন্ত্রাস শেষ হবে, ভূস্বর্গে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা হবে, শান্তি আসবে। হয়নি তো। পহেলগাঁওয়ের ঘটনা তো ওদের ওই দাবিকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। তবুও ওরা লজ্জা পেয়েছে কি না? কেন? কেন গোয়েন্দা বিভাগ আগাম খবর দিতে পারেনি? কেন ঠিক তখনই বৈশারান ভ্যালিতে কোনো পাহারাদার ছিল না? কেন পর্যটকদের সব ঠিক হয় বলে অ্যালাউ করা হলো? কেন এতজন মারা গেল? কে উত্তর দেবে? পুলওয়ামার মতো পহেলগাঁওয়েরও কোনো দিন কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না স্যার। 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস পার হয়ে গেল, 100 দিন হয়ে গেল, যারা সন্ত্রাস করছে তাদের কোনো খোঁজ ছিল না। যেই আলোচনা শুরু হলো সংসদে, অমনি তাদের 3 জনকে খুঁজে পেয়ে মেরে দেওয়া হলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি তাহলে এদের অ্যারেস্ট করে রেখে দিয়েছিলেন স্যার, যাতে ঠিক আলোচনার সময়ই মেরে দিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন? সো অ্যাস্টনিশিং স্যার, নইলে এত বড় কোইন্সিডেন্স কি করে হয়? 370 কি, কেন, কোন পরিপ্রেক্ষিতে একটা নির্বাচিত সরকার করেছিল, সেই ইতিহাসকে মুছে দিয়ে, ভুলিয়ে দিয়ে আর একটা সরকার তাকে একতরফা তুলে দিল। কাশ্মীরিয়াত, কাশ্মীরের অধিবাসীদের যে নিজস্বতা, তাকে বারবার আঘাত করেও কি এই সরকার আরো বেশি করে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করছে না? লেবার স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে জম্মু কাশ্মীর গিয়ে শ্রীনগর, ডাল লেক, পহেলগাঁও, সোনমার্গ, গুলমার্গ, জম্মু সব জায়গায় একটা কথাই বলতে শুনেছি ওখানকার সাধারণ মানুষকে, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের এই স্টেটহুড, তাকে ডিমোশন করে ইউনিয়ন টেরিটরি করে দেওয়া হলো, এটা মানতে পারছি না। ঠিকই তো, এত বড় একটা সিদ্ধান্তের সময় জম্মু কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মত নিতে একটা গণভোট নেওয়া উচিত ছিল নাকি? আমরা কৃতজ্ঞ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে। ধর্ম জেনে বেছে বেছে আত্মতায়ীরা হত্যা করেছে, এটা জানার পরেও এই সন্ত্রাসবাদ রোখার জন্য তারা মুখ খুলেছেন, এক হয়েছেন, মিছিল করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, ভূমিকা নিয়েছেন। উই স্যালিউট দেম। কাশ্মীরকে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে, কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিলেই তো শুধু হবে না, ওখানকার দিন আনি দিন খাই গরিব মানুষগুলি যাবেন কোথায়, খাবেন কি? পর্যটনই সেখানে বাঁচার খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, আর তা তো একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তখন বাঁচার উপায় কি? খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের প্রধানমন্ত্রী, মেক ইন ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী, বিকশিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনেক লম্বা ভাষণে এই সমস্যা বা সমাধানের কথার উল্লেখও আমরা শুনিনি। সেম সেম। তিনি বললেন কোন দেশের কোন নেতা নাকি তাদেরকে যুদ্ধবিরতি করতে বলেননি, আর তার মুখে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের কথাও শোনা গেল। কিন্তু স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে একবার নয়, দুবার নয়, একাধিকবার বারবার বলেছেন তিনিই নাকি বাধ্য করেছেন এই দুটি দেশকে যুদ্ধবিরতি করতে, সিজ ফায়ার করতে। এর উত্তরে এতদিন ধরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিছু তো বলেনই। সংসদে দাঁড়িয়েও বিশ্বগুরু, 56 ইঞ্চি ছাতির আমাদের গর্বের প্রধানমন্ত্রী বুক বাজিয়ে সিনা টান করে বলতে পারলেন না কেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা অসত্য, তা অসত্য? কালকেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর একই কথা বলেছেন। তাহলে কে অসত্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট না আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী? আরে যতই হাততালি দিন না কেন, আমরা নতুন করে শিখছি আমেরিকার প্রেসিডেন্টই আমাদের হত্যাকর্তা, বিধাতা। তিনি যা বলবেন তাই হবে। দুটো দেশের কোনো ক্ষমতা নেই নিজেদের মধ্যে কথা বলে মেটাবার। আচ্ছা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এড়িয়ে গেলেন কেন, চেপে গেলেন কেন, এত ভয় কিসের?
বিদেশি পণ্যের জন্য ভারতকে বেশি শুল্ক দিতে হবে, এই হুমকির কাছেই কি আমরা মাথা নোয়ালাম? সো আনফরচুনেট স্যার। 2008-এ কিন্তু মনে আছে আমাদের, তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মোদিজি মুম্বাইতে গিয়ে ট্রাইডেন্ট হোটেলের বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বিজেপি, ব্রুটাল টেরর স্ট্রাইকস অ্যাট উইল, weak government, unwilling and incapable, fight terror, vote for BJP. This was the advertisement of BJP. সব ভুলে গেলে চলবে নাকি? There should be a limit of hypocrisy, isn't it? আমরা তাই স্পষ্ট করে বলছি, এই সরকারের হাতে কিন্তু রক্ত লেগে আছে, তাই দেশ ও দেশের মানুষ তার জবাব চায়, স্পষ্ট জবাব। এই অহংকার, অ্যারোগ্যান্স শেষ কথা বলবে না। 303 থেকে মানুষই 240 করেছেন, মানুষই এরপর 200-র নিচে নামাবেন। আর শেষ কথা, পশ্চিম বাংলাকে কারা যেন পশ্চিম বাংলাদেশ বলছেন, কে যেন বলছেন, প্লিজ, টাকা দিয়ে বাঙালিকে কেনা হচ্ছে, বাংলায় সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে বলে। 1 minute sir, 1 minute, 1 minute, we will adjust with our party time. Please finish. বাংলায় সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে বলে কারা যেন গলা ফাটাচ্ছেন, ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্টের রাজ্যে কারা যেন বাংলায় কথা বললেই হেনস্থা হচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকের অত্যাচার হচ্ছে, এসআইআর এর নামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এনআরসি চেষ্টা। Thank you. It's not the subject. NR Ilango, please. No, I'm calling Mr. NR Ilango. Please, no, it's please. Honorable Deputy Chairman, thank you for your. Please, your time is over. No, stop. Your time is over. Stop my clock. Your time is over, Dolaji. No, you please, your time is over. One, please. Dolaji, please conclude. Dolaji, please conclude. Dola Senji, please conclude. Please conclude. তাই দেশের মানুষের 350 কোটি টাকা খরচ করে 33টা দেশে বিশ্বগুরু ঘুরে বেরিয়েছেন, তারা একজনও ভারতকে সাপোর্ট করেনি। পৃথিবীর ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, উৎসাহ, অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা, অন্যায় কোনোদিন শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে Mr. NR Ilango, you speak now. You speak. Deputy Chairman, thank you for this opportunity to speak on this subject. Sir, it's not going on record. My time is to be stopped. It's a start and speak. That will go on only on the record. Nothing else is going on record. Please. Sir, the basic view of our party, time is to be readjusted. Please. The view of our party and our leader are that terrorism, whether internal or cross the border, shall not be allowed. The sovereignty of India shall not be intruded by any country in any manner, and if anybody does, they must be taught a lesson appropriately. The cross-border terrorism must be necessarily erased from the face of the earth. The people of Tamil Nadu will be the first to lay down their lives to protect our mother nation. These are the views of our party and our leader. So in fact, Tamil Nadu is the only state which had a rally led by our CM to show our solidarity to the army. No other state has done. Sir, coming to the discussion, I had the benefit of hearing the ministers. Most of them spend their time in accusing the Congress and their rule. They very hardly reply to the questions which are raised. Sir, the External Affairs Minister said that there was a diplomatic success of the government in TRF being declared as a foreign terrorist organization. We appreciate that development. But the External Affairs Minister, the Honorable Home Minister and the Prime Minister in the Lok Sabha has not said anything about what the President Trump said, that he negotiated the deal between India and Pakistan. So we don't want these lectures for hours together. We want only one sentence from the Union government saying that what Mr. Trump says is incorrect. What Mr. Trump says is a lie. Make that statement. There is no other further discussion is required. Sir, in Tamil, in Silappadigaram, there is a say, Arasiyal Pradittorku Aram Kutrag. Sir, which means virtue will punish those who are err in politics. In fact, I am not giving the literal translation. If you are not coming with the highest standard of virtue while answering this debate, then the same virtue will punish you. That should be kept in my mind.
whatever they say are out of context quotes and off truths. Sir, now coming to the question of Operation Sindhur, the Home Minister, the Defense Minister was saying that the question, what should be asked by us, not how many flights we lost. The question should be asked, how many Pakistani flights were shot down. That is what he says. Sir, as far as the question is concerned, if the loss of flights are due to the strategical mistake of any human, it is very much understandable. Quite often mistakes happen. But if it is relating to the competency of the Rafale flights, then everything is a problem. The sub-questions would be, who had evaluated the competency of Rafale flights? Who had authorized their purchase, and how will you be protecting our great nation with these flights? If it is relating to the competency, should not there be a fresh and proper investigation regarding the purchase of Rafale deals? When the external affairs, sir, that is the first question to be answered as far as the flights are concerned. Sir, then, as far as the Defense Minister's statement that the identity of these persons, 3 persons who were killed yesterday, was found through identifying the rifles first. I read in the newspapers today that the rifles were flown from Srinagar to Chandigarh, and the flight, the shells, empty shells at the site of the attack were compared. That's the best way of forensic science comparison. That is like a fingerprint matches. That's 100% proof. I agree with that. But what that establishes is the identity of the weapons, not the identity of the terrorist. Sir, do we here believe that from the date of attack at Pahalgam, these 3 terrorists were roaming around that very same place, having cup of tea in every tea stall, to be identified by some other people? Sir, you have 2 accused in your custody for the past about 20-25 days. Why not the NIA bring them and identify the dead bodies? That's the best proof. Now these 3 persons who are killed, whether they are the terrorists or not, nobody knows. Their identity of the accused is not yet established 100%. By probabilizing, by putting materials here and there, you try to convince that these are the 3 persons who are involved. But the best evidence which is available, by showing these dead bodies to the accused in your custody, you have not established the identity of the terrorist. So I am not going by the standards of the High Court or Supreme Court. I am going by the standards of a normal, prudent man. There are answers which are yet to come from the Union to establish these are all the terrorists and we have dealt them according to law. That is not happening. Sir, my requests are this. Please come with the whole truth. Don't accuse the rulers, the party which was in power in earlier times. That is not, we are not here for that. 3, these off-truths, these quotes out of context will not help this discussion. Again I am saying, and I am finishing my statement by saying, Arasiyal Pradithorku Aram Kutrag. If you are not coming with the highest standard of virtue, the same virtue will definitely punish them. Srimastan Rao Yadav Bida. Opportunity, I, on behalf of our party, Telugu Desam Party, and our leader, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, rise to speak on the subject Operation Sindhur that was launched by the Indian Armed Forces on May 7, 2025, in the immediate aftermath of Pahalgam terrorist attack that snatched away the lives of 26 innocent civilians from across India. I would like to take a moment to pay my respect to the innocent lives lost, sir. There are moments in the nation's history that don't come softly. Pahalgam was and will always be one such moment. Sir, India's foreign policy is shaped around the concept Vasudhaiva Kutumbam, which means the world is one family, and our country has done its best to spread this philosophy. But sir, every family has that one person who will do
everything in their power to cause trouble and then play the victim. Only one country comes to my mind is Pakistan. For far too long, we have been told to keep calm, show restraint, and turn the other cheek while they go about causing mayhem, taking innocent lives, and blatantly harboring terrorists. It truly, sir, terror's own country it is. I am proud to say that in this new India, under the guidance and the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we will no longer sit quietly. Instead, we shall respond in swift, precise and strategically calibrated manner. Operation Sindhur was a limited tri-services military operation aimed at neutralizing key terror infrastructure located in Pakistan and illegally Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation, and let me underscore, sir, these were not military targets. The operation focused on eliminating terrorists, and I am happy to state that Indian armed forces were successful in their mission. In retaliation, Pakistan failed field marshal attempted a series of drone and missile attacks against Indian schools, hospitals and religious sites, not even sparing the Golden Temple. All of these were effectively neutralized by our military-led air defense grid. Though this operation achieved our aim of forcing Pakistan to surrender. Had they not surrendered, they would have been defeated again as they have been continually since independence. We know what our military capability is and the extent of supremacy we have over them. Though the success of Operation Sindhur, Pakistan will now think 100 times instead of one before launching such terror attacks into our country. We must understand why Pakistan chose to carry out the Pahalgam attack. Honorable Deputy Chairman, sir, the reason is quite clear. Had the attack not occurred, Jammu and Kashmir was on track for yet another record-breaking tourist season. Pakistan understands that peace in Kashmir weakens its political narrative. The act of terror was not just an attack. It was a cry for relevance. And in response, Operation Sindhur didn't just hit infrastructure, it hit the core narrative of Pakistan obsession with Kashmir. Sir, our women officers, what deserves special mention and national pride is the fact that the face of Operation Sindhur from the start were our highly capable women officers, sir. International outreach. I take pride in noting that our party, Telugudesam Party, has played a proactive role in India's diplomatic outreach following the Pahalgam terror attack and Operation Sindhur. Two of our TDP MPs were part of all-party delegation engaging with partner countries, carrying India's clear message of zero tolerance for terrorism to the international community, sir. In view of the heightened threat from Pakistan and China, Operation Sindhur, the government of India should raise defense spending above the current 1.5% of GDP to at least 3%, sir. This is our suggestion. And the last one point, sir. Two grieving families, late Sri Madhusudan Rao Somisity from my hometown Kavali and late Chandramoli from Visakhapatnam from our Andhra Pradesh were also tragically affected by April 22nd, 2025 Pahalgam terrorist attacks, sir. Promoting urgent support. Sir, let me conclude by stating that Operation Sindhur was not just a military operation, it was a statement of intent. The message is very clear. Terrorism will be led with the decisive consequences and support for terrorism will expose with unmistakable clarity. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. मैं श्री मानस रंजन मंगराज जी को बुलाऊं. Just wait for a minute. It's an announcement. माननीय सदस्यगण, आपसे एक अनुरोध है. Honorable members, it has been observed that the members often approach the table of the House to inquire or hand over slips for participation in the discussion or debates, which unavoidably disturbs the proceedings of the House. Attention of the honourable members in this regard is drawn towards the Parliamentary Bulletin 2nd, dated 14 July 2025, wherein members have been requested not to approach the table of the House. Rather, they may send those slips containing their message or query to the table through the chamber attendants, unless otherwise directed by the chair. Members' cooperation in this regard is solicited. Sri Manas thank you, Jayaji. Sri Manas Ranjan Mangraj. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity
to speak on Operation Sindhur. I rise today to place on record my deep appreciation and pride for the Indian Armed Forces for their exceptional and historic execution of Operation Sindhur on May 7, following the cowardly terrorist attack in Pahalgam. This operation, carried out deep into terrorist bases in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, POK, stands as a clear message. India will not tolerate terrorism. As a clear message, India will not tolerate terrorism, nor will it remain silent in the face of threats to its sovereignty and citizens. The success of Operation Sindhur reflects the unmatched bravery, discipline and professionalism of our armed forces. Honorable Deputy Chairman, sir, Operation Sindhur is not just a military strike. It is a testament to the strength and preparedness of our forces. Our soldiers prepare fearlessly across all terrains, whether it be with high Himalayas, dense forests, or hostile conditions. Water, land and air, nothing is beyond the reach of our defense personnel. Sir, what makes this mission truly inspiring is not just its military precision, but the values behind it. It reflects India's unwavering commitment to both national security and humanitarian principles. Our forces believe in protecting lives and uphold the dignity of every citizen, even in the midst of conflict. Sir, Odisha, my home state, and the people of Odisha have always stood in support of our armed forces. From responding to natural calamities to leading in military operations, the Indian Army has consistently demonstrated compassion, discipline, and transparency, values deeply respected by every Odia. Sir, Operation Sindhur has proved once again that our soldiers are not merely warriors in uniform, but also savers in times of crisis. Their dedication goes beyond the call of duty. Their actions are above party politics. They are the tricolor, not ideology. They protect the people, not power. Let this House, united across political lines, place on record its gratitude to every officer, Jawan and commander involved in this mission. Let us honor their courage, their sacrifice and their service. Sir, this operation has become a natural symbol of unity, of strength and of India's will to protect its people. May their heroism inspire generations to come. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. माननीय श्री मनोज कुमार झा. माननीय श्री मनोज कुमार झा. शुक्रिया माननीय सभापति महोदय. मैं उम्मीद करता हूं कि दिन के जिस प्रहर में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, ना कलुषित कोई बात करूंगा, ना आक्षेप होगा, कुछ चिंताएं होंगी, कुछ सरोकार होंगे. 3 हिस्सों में अपनी बात, अपने दल की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं. सर, पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक कितना सीखा नहीं सीखा, ये पहलगाम ने बता दिया. सर, ये पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी. सामूहिक पीड़ा. वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए. उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही. आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की रही. सर, अब समय आ गया है एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं, आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक लोगों को कहे हम क्षमा प्रार्थी हैं. हम इतिहास से सबक नहीं लेते. माफीनामा आवश्यक है. किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, किसी दल को नहीं, सबके लिए कह रहा हूं. सदन की ओर से यह माफीनामा जाना है. जान चली जाती है. सर, मैं क्या कहूं, खुफिया एजेंसी को कोई कहता है जानकारी थी. जानकारी थी तो उस इशारे पर इरादे क्या बने, किस प्रकार की कोशिश हुई, हम आज तक क्लूलेस हैं. आज तक क्लूलेस है.
और एक और मैं चीज कह करके आगे बढ़ूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा महज नारा नहीं, एक नैतिक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी है, सिर्फ स्लोगनियरिंग नहीं है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दे को स्लोगनियरिंग का विषय बना दिया। एक और डिस्क्लेमर दे करके मैं अपनी बात, सर ये पहलगाम के बाद जब चूंकि सदन नहीं बैठ रहा था तो मैंने लगातार लेख भी लिखे। एक लेख लिखा था सर, यूनिटी इन ग्रीफ। इस देश की एक खूबसूरती है सर, कोई आपदा आती है, कोई सामूहिक इस प्रकार की चीज होती है, यह देश एक जैसा सोचने लगता है सर, एक जैसा सोचने लगता है। कोविड ने एक किया था, इस तरह के हादसे भी एक कर देते हैं हम लोगों को। लेकिन सर ये जो नेशनल यूनिटी इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ है, इट शुड बिकम अ काइंड ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम वैलिड क्रिटिसिज्म। ये फर्क है ना सर, ये फर्क मैं समझता हूं कि एक परिपक्व लोकतंत्र में यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग चीज है। कॉन्फ्लेट करते हैं पाकिस्तान के लोग। कल ही मिलिंद भाई बता रहे थे, यह हालांकि बहुत पिटा हुआ डायलॉग है कि ऑल नेशंस हैव एन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हैज ए नेशन। हमारी आर्मी की खूबसूरती रही, जैसा मानस ने कहा अभी, दे डोंट वियर एनी रिलीजन, एनी आइडियोलॉजी ऑन देयर स्लीव्स, इन देयर हार्ट्स, एवरीवेयर इट इज द ट्राइकलर। हमारा अप्रोच भी वही होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं सर ये बात, और क्यों कहने के लिए मजबूर हुआ हूं सर, जब पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा जाति नहीं। सर लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का, उसने बारूद के साथ आए नफरत के उस संदेश को नकार के रख दिया। कहीं वो नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी, बल्कि बाद में इस बात पे आता, बल्कि भारतवर्ष ने एक संदेश दिया। जब सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी ब्रीफिंग के लिए आती थी, हम सब का गर्व से सीना फूल जाता था। वो मेरा हिंदुस्तान है, मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान, ये उस्मान, लैंड ऑफ नौशेरा, इसका मजहब पूछ करके इसकी देशभक्ति पर शक करना देश को कमजोर करना। प्लीज प्लीज लेट मी स्पीक। आज मैं किसी दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं। लेट मी स्पीक। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बहस, अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं, उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया, आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं होता है। घर का चिराग बुझता है, बूढ़े माता पिता को खोने के बाद भी वैक्यूम रहता है। हम कभी मुआवजे, श्रद्धांजलि, पुष्प के आगे कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये वैक्यूम, ये कैसे ये वॉइड फिल इन होगा। मैं एक चीज कहना चाहता था महोदय, सच तो यह है कि जवाबदेही तय नहीं होती है। मैं अक्सर देखता हूं, मैंने अपने नेता से भी पूछा, कुछ पार्थिव शरीर बिहार भी आ रहे थे, हमने पूछा, मैं नहीं था, सर क्या होता है, पार्थिव शरीर पे जाते हैं, फूल बरसाते हैं, रीद लगता है एक सर, कई कैमरे होते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी के वैक्यूम को हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई कैमरा उस वैक्यूम को नहीं भर पाता है। वैसे कैमरे का इजाद नहीं हुआ है सर। हम इस नजरिए से क्यों नहीं सोच सकते। कल मैं थोड़ा तारतम्य मेरा टूट रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था सर कि अगले दिन बिजनेस एज यूजुअल हो जाना ठीक नहीं। आज हुआ, कल बिसरा दिए, बिजनेस एज यूजुअल।
राजनीति के लिए हमेशा वक्त है। अरे हम आप आतंक पे, सेना के शौर्य पे राजनीति करके क्या करेंगे? हमारे पास राजनीति के लिए लोकोन्मुख मुद्दे हैं, उस पर बात होगी। कभी आप चुने जाओगे, कभी आप नहीं चुने जाओगे, कभी ये चुने जाएंगे, कभी नहीं चुने जाएंगे। लेकिन सेना का मान और शौर्य एक ऐसी चीज है। सर, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। ये संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं। भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पर रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा। आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। आपके समक्ष प्रश्न था, जो सरकार से प्रश्न थे, भारत माता से नहीं थे, भारत वर्ष से नहीं था, भारतीय सेना से नहीं थी। ये एक जो चीज होती है। और सर, मैंने लिखा, कई बार लिखा, इस सदन में भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। कोई भी सरकार चाहे उनकी रही हो या आज आपकी है, आप राष्ट्र के पर्याय नहीं हैं। हम कल खेल में हो या ना हो, हम में से बहुत लोग नहीं रहेंगे, सरकार भी बदल जाएगी, पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन यह देश तो भाई रहेगा। इसकी मिट्टी अद्भुत है, यह जिंदा रहेगा। तो देश रहने दीजिए, सरकार अपनी बात करे। और एक बात तो मैं और कहूंगा, क्या ही कहूं, नेहरू लाइफ वेस्ट हैं इस सरकार के लिए। वो जो हवाई जहाज में जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर जहाज डूबने के क्रम में लाइफ वेस्ट को ऐसे फूकिए, फुला लीजिए, ताकि पानी में उतरने में, नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में, उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको भी पहले कहा, आज फिर आपके समक्ष दोहराता हूं। पहलगाम हुआ सर, मैंने वो बात कही, जो ट्वीट आया, नफरत, टेलीविजन हाउसेस में डिबेट होने लगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल में एक चीज मैंने बहुत पहले भी कही है, दोहरा रहा हूं। सर, कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया, वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। लेकिन उसी कश्मीर में बाद के विजुअल्स में वहां की चुनी हुई सरकार, हालांकि मैं मानता हूं सरकार के बारे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। तो ये आज अर्जी का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक अर्जी लगा देता हूं इस सरकार के समक्ष, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बहाल करिए। ऐसी छवियां जहां सीएम एक खास जगह ना जा सके, मौन करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके बाद सब दूसरी पीड़ा एक हुई। हमारे एनएसए साहब ने कहा, एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर, ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूंछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूंछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब, कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। सर, ये आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं, मुझे जवाब नहीं चाहिए। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के विदेश मंत्री जी नहीं है, मैं एज ए कैरियर ब्यूरोक्रेट उनका बड़ा फैन था।
मैं राजनीति में नहीं था, फॉलो करता था उनको, लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं उनको सिर्फ दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट है जिसमें आत्ममुग्धता का भी पुट है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नोशन गायब सा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी हाल में बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी थी 18 से 24 अप्रैल, पहली बार इस देश में उस एनिवर्सरी को याद नहीं किया गया। वो एनिवर्सरी क्या थी सर? एफ्रो एशियन कंट्रीज 55 में जुटे थे, उससे नॉन अलाइन ग्रुप का जन्म हुआ था, बिसरा दिया सब। भाई हम इमीडिएट में देखते हैं अपनी विदेश नीति को, सर हम तो बहुत गरीब गुरबा देश थे, लेकिन धौंस से बोलते थे बड़े बड़े मुल्कों को माइंड योर बिजनेस। कहां आ गए सर हम कि गाजा के रेजोल्यूशन पे हम एब्सटेन कर जाते हैं दुनिया के गिने चुने देशों में। मानवता का सवाल है, भारत ने मानवता के सवाल से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। कौन से भारत का निर्माण हो रहा है ये मैं, और एक और चीज कहूं, हम लोग बचपन में एक डायमंड पॉकेट बुक्स में चाचा चौधरी पढ़ते थे। हाँ, ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनमें मुझको चाचा चौधरी के सारे नेगेटिव गुण दिखते हैं। उनको एक चौधराहट सवार हो गई है। अब खरगे साहब कल कह रहे थे मेरा स्पीच खत्म होते होते 30वीं बार बोल देगा, अखबार में छपने से पहले 30वीं बार बोल गया वो व्यक्ति, और अभी कोई गारंटी नहीं है, मैं बैठूंगा बाहर जाऊंगा सुना कि 32 बार बोल चुके हैं अब तक। सर मैं इसलिए कह रहा हूं इसका प्रतिकार सूत्रों के हवाले से ना हो कि सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने दखल नहीं दिया। सूत्र नहीं, ये सूत्र आजकल बहुत उत्पाती हो गए, खबरें सीधे नहीं आती हैं, सूत्रों के माध्यम से आती हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, प्रतिकार के लिए मैंने एक प्रपोजल रखा हुआ है, आई विल कम टू दैट। लेकिन मैं एक चीज और कह करके, डिप्लोमेसी ट्रायल बैलून भी ना हो सर अभी तो। और एक और चीज सर, डिप्लोमेसी के संदर्भ में सर, इतनी मित्र विहीनता इस देश की कभी नहीं रही। आपने गुडविल मिशन पूरी दुनिया में भेजा, बहुत अच्छा निर्णय था। इस रेजिम में पहली बार इस तरह का मिशन हुआ था। ऐसे मिशन लगातार भेजिए, कॉन्फ्लिक्ट टाइम और नो कॉन्फ्लिक्ट टाइम, लेकिन ऐसे गुडविल मिशन अपने देश में भी भेजिए जहां एक कर्नल को सिर्फ उसके नाम सरनेम की वजह से एक मंत्री अपशब्द अशोभनीय टिप्पणियां करता है, तो गुडविल मिशन तो इस देश को चाहिए। हमारा गुडविल इस देश में हमने खत्म कर दिया है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक शेर है बड़ा मशहूर, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। ये किनके लिए है? जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि भारत के लिए प्रेम है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा, चूंकि कल की प्रोसीडिंग मैंने लोकसभा की भी देखी, मुझे दुख हुआ कि इस पीड़ा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सेना के शौर्य को पूरा सदन सलाम कर चुका है, लेकिन जो विसंगतियां सेना ने इंगित की समय समय पर, जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसको रेटोरिकल अंदाज से, रेटोरिक से कवर नहीं किया जा सकता है। कम क्लीन, कम स्ट्रेट, वी आर विथ यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सो आई प्रपोज फ्रॉम दिस हाउस a resolution, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. Jai Hind, sir. Thank you, Manoj ji. Message from Lok Sabha. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 30th of July 2025 adopted the following motion: that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint one member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 in the vacancy caused by the retirement of Shri P. Wilson from Rajya Sabha, and communicate to Lok Sabha the name of member so appointed by Rajya Sabha
to the joint committee. Next speaker, Sri Vikas Ranjan Bhattacharya. নমস্কার চেয়ারম্যান স্যার, আমি বাংলায় বলার জন্য আপনার অনুমতি চাইছি। আমাদের এদিকে যারা আছেন তারা সকলেই নিজেদের খুব গর্বিত হিন্দু মনে করেন। এই গর্বিত হিন্দুদের নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ দেবের কথা মনে আছে। রামকৃষ্ণ দেব বলতেন, তোমার আঙুল যখন একটা আঙুল অন্যদিকে তাকাচ্ছ তখন তিনটে আঙুল তোমার দিকে আছে। অর্থাৎ অন্য লোককে অভিযুক্ত করার আগে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করো। আমরা কি দেখতে পেলাম? ভারতবর্ষের বুকে সন্ত্রাসবাদকে দমন করার জন্যে আমাদের দেশে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কয়েকটা অদ্ভুত কোইন্সিডেন্স। পুলওয়ামা ঘটেছিল একটা নির্বাচনের আগে, পহেলগাঁও ঘটল আরেকটা নির্বাচনের আগে। তো আমাদের দেশে এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণগুলো ঠিক নির্বাচনের মুখোমুখি কেন ঘটে, এটা একটা আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। এই নির্বাচনের সঙ্গে এই ইনসিডেন্টের কি যোগাযোগ আছে? সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে গেলে সেটা বুঝতে হবে। আমরা আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না পুলওয়ামায় কি ঘটেছিল, পুলওয়ামার জন্য কারা দায়ী হয়েছিলেন। কিন্তু পুলওয়ামার পর একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়ে গেল এবং তখন বলা হলো, আজকে যা বলা হচ্ছে একই কথা বলা হলো, পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়েছি, সন্ত্রাসবাদ শেষ করে দিয়েছি, এখন আমরা গর্বিত ভারতবাসী, আপনাদের আর কোনো চিন্তা নেই। আমরা ডিমনিটাইজ করেছি। কেন ডিমনিটাইজ করলাম? না সন্ত্রাসবাদের কোমর ভেঙে দেব। আমরা আর্টিকেল 370 তুলে দিলাম, ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করলাম। কাশ্মীরি স্বাধীন রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগের সূত্র ছিল আর্টিকেল 370, সেটা তুলে দিলাম। কেন? সন্ত্রাসবাদ চলে যাবে। আজকে তো আমাদের ভাবতে হবে যে সন্ত্রাসবাদ গেল না সন্ত্রাসবাদকে আমরা নতুন করে উজ্জীবিত করলাম। আজকে আবার পহেলগাঁও ঘটে গেল। পহেলগাঁও ঘটলো ঠিক একটা নির্বাচনের মুখোমুখি, যখন বিজেপি বিহারে খুব বিব্রত, তখন ঘটিয়ে দেয়া হলো এই আবেগটাকে আবার নির্বাচনে কাজে লাগাবার জন্যে। চেয়ারম্যান সাহেব, প্রথম যখন অল পার্টি মিটিং হয়, সেই পার্টি মিটিংয়ে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে আমি ছিলাম। আমরা পরিষ্কার বলেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদকে, সন্ত্রাসী ইন্ডিভিজুয়ালকে না, সন্ত্রাসবাদকে দমন করার জন্য যে ব্যবস্থা নেবে সমর্থন করব, কিন্তু ওই যুদ্ধবাজ হলে চলবে না। ওই জিঙ্গোইজম ভারতবর্ষের কৃষ্টির সঙ্গে খাপ খায় না। ভারতবর্ষ পৃথিবীর বুকে পরিচিত একটি শান্তিপূর্ণ দেশ, ননারায়ণ মুভমেন্টের নেতা, তাই সবাই ভারতবর্ষকে সম্মান করে। তা আর্টিকেল 370 হওয়ার পরেও কিন্তু সন্ত্রাসবাদ দমন হয়নি। আর সঙ্গে সঙ্গে কি হলো? আক্রমণ আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে বিভাজনের জন্য বিজেপি আইটি সেল প্রচারে নেমে গেল। হিন্দু দেখে দেখে খুন করা হয়েছে। কে দেখেছেন বাবা? যিনি দেখেছিলেন তখন তিনি কোথায়? কিন্তু আমরা একথা বললাম না যে একটি মুসলমান তরুণ তার পরিবারের কথা না ভেবে পর্যটকদের বাঁচাবার জন্য নিজের জান দিয়ে দিয়েছিলেন। এটার মধ্য দিয়ে গোটা দেশের যে ভারতীয়ত্ব সেটা প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে আমরা সম্মান জানালাম না। আমরা দেশের ভেতরে বিভাজন তৈরি করলাম। দেশের ভিতরে বিভাজন তৈরি করে কি সন্ত্রাসবাদকে আটকানো যায়? যায় না। তাই ভারতবর্ষের মানুষ তখন দেখলেন যে এটাকে একটা হিন্দুত্ববাদী প্রচারের ঢঙ্গে নেওয়া হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, অপারেশন সিন্দুর এই নামটার সঙ্গে ভারতীয়ত্ব নেই, আছে হিন্দুত্ব। তো হিন্দুত্বকে সামনে এনে কখনো গোটা ভারতবাসীকে নিশ্চিত আশ্রয় দেওয়া যায় না, যতই আমরা বড় বড় কথা বলি না কেন। আমরা দেখলাম আক্রমণের পর তারা বললেন অপারেশন সিন্দুর আমরা সব শেষ করে দিয়েছি। গোটা পৃথিবী আমাদের সঙ্গে আছে। গোটা পৃথিবী যদি তোমার সঙ্গে থেকে থাকবে। আমরা দেখলাম ইউনাইটেড নেশনসে তুমি পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করাতে পারলে না। শুধু পাকিস্তানের নাম ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলে উল্লেখ করতে পারলে না তা নয়, এমনকি
ব্রিক্সে, সাংহাই কোঅপারেশনে কোথাও পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করা গেল না। দুঃখের কি জানেন চেয়ারম্যান সাহেব, আমাদের খুব কাছের প্রতিবেশী ভুটান, মালদ্বীপ, এমনকি মরিশাস, যে মরিশাসে ভারতীয়দের সংখ্যাই বেশি, তারা পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই ভূমিকার পেছনে পাশে দাঁড়ালো না। তাহলে কি দাঁড়ালো? নিজেকে বিশ্বগুরু বলে বড় বড় বক্তৃতা করে আমি সব করতে পারি, আমি আমার পৃথিবীকে আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি, আমি শক্তিশালী দেশ, কোথায় দাঁড়ালো? আমাদের কবি বলেছিলেন, নিজে যারে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়। আজকে গোটা পৃথিবীতে ভারতবর্ষ ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বিচ্ছিন্ন, বরং পাকিস্তান সেখানে সুবিধে পেয়ে গেল। আজকে পাকিস্তানের পক্ষেই বিভিন্ন দেশ কথা বলছেন, এটা আমাদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। তার কারণ আমাদের দু দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আজ পর্যন্ত একবারও ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বা ভারতবর্ষের কোনো ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল এ কথা বলেননি যে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তার কোনো রোল নেই, তার ভূমিকা আমরা অগ্রাহ্য করি। এইভাবে ভারতবর্ষের যে সম্মাননা সেটাকে নষ্ট করা হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব, আজকে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বজায় রেখে দেশের ঐক্য তৈরি করুন, দেশের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী প্রচার ছেড়ে ভারতীয়বাদ প্রচার করুন, ভারতীয়ত্বই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। এই কথা বলে সময় শেষ হয়েছে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। Thank you. Next speaker, Sri Subhash Chandra Bose Pille. Honorable Deputy Chairman, sir, I am grateful to you for giving me the opportunity to express my views on matters vital to our national security. I rise to speak on matter that has shaken the whole world, the Patragam terror attack on and Indian resolute response through Operation Sindhur. In this terror attack, 26 innocent lives were mercilessly killed. It was a deliberate blow to the India's secular fabric, an attack on our unity and an attack on our freedom and our identity. Our party, the YSR Congress Party, expressed the heartful solidarity with the people of Jammu and Kashmir. The region's democratic revival, marked by peaceful elections in Jammu and Kashmir in late 2024, which Pakistan did not like it. Therefore, we strongly condemn Pakistan's continued attempts to disrupt peace and progress of Kashmir. Our party stands firmly behind the Indian armed forces and their duty to protect our nation. India today faces not just physical threats but virtual ones too. Following the Pahalgam attack, a wave of cyber institutions linked to Pakistan targeted key Indian networks from defense institutions and public utilities. Under the bold and dynamic leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Operation Sindhur was launched with a purpose to transform our sorrow into strength and ensure that the people behind the act were met the justice and India succeeded in its mission. Operation Sindhur was India's Yugadharma. It showed the world that India does not act suddenly. It acts with conviction and with resolve. And when India rises, the world takes note. Sir, India acted quickly to reinforce cyber defenses and protect sensitive systems. As cyber warfare becomes a defining feature of modern conflict, strengthening the digital security is no longer optional, as it is essential to safeguard the national sovereignty and public trust. India's anti-terror diplomacy has gained strength to all party parliamentary delegations
sent to key partner nations across the Asia, Africa, Europe and the Americans. The YSR Congress Party fully supports the initiative. It reflects rare political unity and commitment to safeguarding India's global interests, countering Pakistan's misinformation and build broad-based diplomatic support. Our party reiterates its commitment safeguarding the national security, and in this regard, we totally support Prime Minister Shri Narendra Modi's directions and initiatives for strong, successful, decisive Operation Sindhur in response to terror attack in Pahalgam. Let us reaffirm today the terror has no place in India, and that those harm our country and our innocent people will find no refuge, not in the soil and not beyond it. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Sri Dr. K. Lakshman, 15 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to speak on this important topic, Operation Sindhur. It stands as a living proof of India's military prowess, strategic clarity of Modi government's zero tolerance towards terrorism. This Operation Sindhur, in fact, April 22 was a black day. When the incident took place, we were in Srinagar. As part of this PSC committee members, we visited Gulmarg, and third day we were in Srinagar. We were shocked to know that innocent 26 people have been killed by the so-called terrorists by asking their religion. The 3 days which we have witnessed how Kashmir and Srinagar got developed after the abrogation of this 370 article. मैं लगभग 3 दशक के बाद मैं श्रीनगर पहुंचा, जब हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा जो हमारे तिरंगा झंडा लहराने के लिए लाल चौक में पार्टी के माध्यम से जो प्रोग्राम दिया गया, उसी प्रोग्राम का संयोजक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। हम उस दिन श्रीनगर तो नहीं पहुंच सके, मगर उस दिन जो 26 जनवरी 1992 में जो झंडा हमारा तिरंगा लहरा गया, बाद में जब देखा, परसों हम जब गए, हमारे साथी बाकी दल के भी नेता थे, जो विकास 370 धारा हटने के बाद जो विकास रोड्स हो, रेलवेज हो, जो हमारे फ्लाईवेज हो, इतना सुंदर कश्मीर श्रीनगर दिखाया हमको, गुलमर्ग भी, स्कूल्स कॉलेज चलने लगे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो, रोड्स, फ्लाईओवर्स और रेलवेज। द टॉलेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, चेनाब ब्रिज, हम दूसरी बार भी जाने का अवसर मिला, हम देखे थे। ये लोग भी हवा के कश्मीर के मुख्य धारे में आने लगे, रोजगार मिला, बच्चे पढ़ने लगे और बाकी लोग ऑफिसर जाने लगे, पत्थरबाजी बंद हो गया। ये पाकिस्तान सहन नहीं पाया। ये जम्मू कश्मीर के लोग जो मुख्य धारे में आने लगे, तो जो साजिश चलाया पाकिस्तान ने, आतंकियों को बढ़ाकर धर्म के नाम पर लोगों में बंटवारा करने का जो साजिश किया, ये हादसा हुआ अप्रैल 22 के अंदर। तो निर्दोष पर्यटक को मारा गया। जो हमारे माँ बहनों का सिंदूर मिठाया, हमारे सरकार मोदी जी और हमारे सेना ने किस तरह ये आतंकवाद एक अड्डा को मिटाने के लिए, इट वॉज ए वेरी प्रिसाइज, focused and targeted attack, and we have seen people throughout the country witnessed through TVs
जैसे हम रामायण के सीरियल के समय में लोग जैसे टीवी के सामने बैठे हुए रहते थे, उसी तरह लगभग एक हफ्ता मई 7 से लेकर लोग जुड़े हुए थे। लगभग 9 टेरर कैंप्स वर डिस्ट्रॉयड, द ट्रेनर्स, हैंडलर्स ऑफ टेरर ग्रुप्स and almost air bases. How we have visually witnessed all these incidents. 100 terrorists have been killed. That was the news. जिस तरह बाद में पाकिस्तान ने ड्रोन के माध्यम से अटैक करने का हमारे सिविलियंस को, हमारे रिलीजियस प्लेसेस को या हमारे प्रॉपर्टीज को नष्ट करने का जो साजिश किया, मगर हमारे वी आर रियली फील प्राउड टू से दैट द टेक्नोलॉजी विच हैज बीन इम्प्रूव्ड, हमारा जो मिसाइल्स, ये एक भी ड्रोन का जो हादसा जो था कोई नष्ट नहीं किया गया। इस तरह हमारा गवर्नमेंट ने by taking all such steps, because right from the day Modi has come to the power, he was very keen on strengthening the defense and defense. Not only that, he has made the CDS for these 3 forces, chief banaya, mukhi banaya, tripling this defense budget, 250% increase in defense productions and 30% increase in defense exports. So right from the day one, this government, हम चाहते थे कि नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट पॉलिसी. वी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी इश्यू. नेशन इज फर्स्ट टू अस. वी स्ट्रांगली बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट. That is our ideology and that is our philosophy. We strongly believe in it. So, apart from this, the Operation Sindhur, this government particularly declared a diplomatic war on the Pakistan by announcing that Indus Treaty, जो पिछले जमाने में किया गया, पिछले सरकार ने किया गया, जो हमारा हक जिस तरह छीन लिया गया, अब चर्चा में भी हमारे विदेशी मंत्री बताया था. तो immediately that treaty was kept in abeyance. Apart from this, ये ऑपरेशन सिंदूर के अलावा जो इंडस ट्रीटी का भी जो जिक्र किया, तो लोग वहां तड़पने लगे. ये दिस इज व्हाट पीपल कॉल, दिस इज नया भारत, न्यू इंडिया. नॉट ओनली न्यू इंडिया एंड न्यू लीडरशिप, ये हमारा नया भारत और नया नेतृत्व किस तरह हमको देश, हमारे जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म के बारे में. Rightly pointed out by our foreign minister, the message was very clear and loud that entire globe came to know how India can tackle this global terrorism. Now India has become now the leadership to tackle this terrorism. And कई सारे मुद्दे जो आए, जो चर्चा में मैं सुन रहा था 2 दिन से, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में, किस तरह लोग बार बार अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप के बारे में वो सवाल उठाना और बाद में सीज़फायर के बारे में अलग अलग मुद्दे को लेकर किस तरह, ये पहली बार नहीं. कांग्रेस जमाने से ये डबल स्टैंडर्ड जो अपनाती, देयर पॉलिसी ऑलवेज बीन लाइक, ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी. इस तरह कांग्रेस ने टेररिज्म के बारे में सी नो एविल, Hear no evil, speak no evil. ये था ये कांग्रेस का रवैया. Whether honoring soldiers or taking decisions against terrorism, Congress always adopted appeasement policies and politically motivated this thing on terrorism. Series of incidents in the past which took place, whether it is in Mumbai, Hyderabad. I being a person from Hyderabad, we have seen how that Gokul Chat incident took place. Nothing has been done. The party which was in power in the state and central being the same party, they have done nothing to this incident. जब भारत में ये अपने दुश्मन को करारा जवाब दिया, तब कांग्रेस ने हमारी सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए. इस तरह कांग्रेस ने हमेशा जो 2016 में यूरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कहा सबूत चाहिए. बाद में हमारे जो सेना ने वीरता, शौर्य, हमारे योद्ध किस तरह दिखाए, उसको कांग्रेस ने कभी भी अपनाया नहीं. 2019 में बालकोट में जो हादसा हुआ, उसके बाद एज स्ट्राइक किया गया. कांग्रेस ने पूछा कितने मारे, और पुलवामा हमले
के बाद भी शहादत के सियासत में घसीटने की जो कोशिश किया ये कांग्रेस पार्टी ने किया। अब ऑपरेशन सिंदूर में भी कई सवाल उठाया जा रहा है, चाहे हमारे सीज फायर के बारे में, जितना ये अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप पे विश्वास करते हैं, हमारे सरकार के ऊपर उनको विश्वास नहीं। हमारे लोकतंत्र के माध्यम से जो 3 बार हमारा मोदी जी ने जीतकर लोकतंत्र के माध्यम में लोगों का दिल जीतकर आज हासिल किया सरकार, उनके ऊपर विश्वास नहीं, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं, और हमारे विदेशी मंत्री आंकड़े के साथ जब बताने के बावजूद भी ये नहीं मानते। इसलिए कांग्रेस जो बात करती है, लोग समझते हैं ये कांग्रेस की भाषा है या पाकिस्तान का भाषा है। जब टीवी हम देखते हैं, बाकी पाकिस्तान के जो डिबेट में देखते हैं, उसी भाषा को ऑलमोस्ट दे हैव बिकम ए लिटिल स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे भाषा वो बात करते रहते हैं। इसलिए आज ये कांग्रेस ने मोदी जी और बीजेपी और सरकार पे गुस्सा हो सकता, क्योंकि बार बार आपको गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 1 बार नहीं 3 बार कंसेक्यूटिवली दे आर विनिंग। They are not allowing the Congress to come to power, not even allowing them to reach 100 or cross 100. अब गुस्सा हो सकते, आक्रोश हो सकते बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये गुस्से